morning to all of you. I am Akshay Pandey from the team Infinity and I welcome you all of you in this session of all the information about the civil service examination. आज जो हमारा सेगमेंट है जिसमें कि हम यूपीएससी परीक्षा से रिलेटेड जो भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इस सेगमेंट्स में हम पहला जो सेगमेंट कवर कर चुके हैं उसमें हमने देखा कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है इस परीक्षा की, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उन सभी के बारे में हमने चर्चा करी। इस सेगमेंट में हम आज देखेंगे कि इस पर्टिकुलर परीक्षा की प्रणाली क्या है, क्या क्या पार्ट्स में आपको ये एग्ज़ाम देनी है, कितने पेपर्स होंगे और उनके क्या मार्किंग स्किल्स होंगी, टाइमिंग्स क्या होंगे, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस सेगमेंट में चर्चा करेंगे। मैं फिर से ये बात रिपीट करूँगा कि जो बच्चे इस वक्त 12th पास हो चुके हैं या 10th में हैं, जिन्होंने अपना IAS फिक्स कर लिया है, ये जो सेशन होगा उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो आप देखेंगे कि जो पूरी जो प्रोसेस है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपकी प्रारंभिक परीक्षा या जिसे आप प्रीलिम्स कहते हैं। ओके, जो पहली आपकी परीक्षा है उसे आप प्रीलिम्स कहते हैं या प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और जो सेकंड होगी उसे आप मेंस कहते हैं, जिसमें कि आपका रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों इंक्लूड होता है। सो दिस इज द मेन classification or the parts of this examination, prelims and mains. So we'll see what are the different important criteria for this examination. हम पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में आपको दो पेपर देने हैं डियर। ओके, सो पहला पेपर होगा आपका जीएस का और दूसरा पेपर होगा सीसैट का। सीसैट स्टैंड फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, सो ये दो पेपर आपको देने हैं। इन जनरल स्टडीज अगर देखेंगे तो ये जो पेपर होगा इसके जो मार्क होंगे इट वुड बी फॉर 200 मार्क्स। सिमिलरली जो सीसैट का पेपर होगा ये भी 200 मार्क का होगा। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वहीं सीसैट में भी आपको 80 क्वेश्चंस। दैट मीन्स 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ओके, ईच। अब अगर इनके मार्किंग स्कीम की बात करें तो देयर वुड बी डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के प्रोविजंस रखे गए हैं। सो फॉर ईच पॉजिटिव हियर यू विल गेट 2 मार्क्स एंड फॉर नेगेटिव यू विल गेट 1/3 डिडक्टेड। ओके, सो अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 1/3 मार्किंग अबाउट 0.33 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पर आपको 2.5 मार्क फॉर अ पॉजिटिव और राइट क्वेश्चन और सिमिलरली नेगेटिव के लिए वापस 1/3 डिडक्ट कर लिए जाएंगे। सो दिस इज द पैटर्न और द मार्किंग स्कीम फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। टाइमिंग्स की अगर हम बात करें सो जो टाइम ड्यूरेशन होगा यहाँ पर इट इज फॉर 2 आवर्स। दोनों एग्जाम्स आपके 2 आवर्स के होंगे। 2 घंटे में आपको ये दोनों पेपर्स क्या करने हैं, अटेंड करने हैं। ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो सीसैट का पेपर होगा इट इज क्वालिफाइंग। व्हाट डज वी मीन बाय दिस? जो सीसैट का पेपर है वो क्वालिफाइंग है, इसका मतलब ये कि आपको यहाँ पर एटलीस्ट 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 66 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। इफ यू डोंट क्वालिफाई फॉर दिस पेपर सीसैट, आपका जो जीएस का पेपर है, ओके, जिसमें कि आपको जनरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो सारे पोर्शन है हम इसके सिलेबस को लेकर एक अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो बट यहाँ पर ही आप देखिए कि अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करते हैं इस पेपर को, देन आपका ये जो पेपर है चेकिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सी सैट को क्या करें, क्वालिफाई करें। ओके, यू हैव टू गेट एटलीस्ट 66 मार्क और अबो so that you can get your paper checked GS1. Okay, so this is what we have in the prelims. Now we'll move to the another, that is the mains or the mains examination, that is the part 2. You can see that this I have taken the notification from the UPSC itself. So this is not something this is what we have taken this entire video on the notification which has been given by the UPSC itself. Okay, so you can see that here they have clearly mentioned, if you don't get 33% marks, okay, if you don't get 33% marks in the preliminary CSAT, then you cannot qualify for the next paper. Okay, so that is the compulsory. Okay, and the GS1, that is the scoring one, whose marks would be decided on the basis of cutoff. Okay, now coming to the mains examination. Okay, so here in the mains you will have to qualify, you will have some qualifying papers too. Okay, so if you see in the mains, you will go to qualifying paper. There would be 2 qualifying paper. Okay, so you can call them paper 1 or paper A and paper B. Okay, they would be for 300 marks each. Now one of the important thing that when you give pre, आप जब pre देंगे तो वहाँ पर जो पेपर आपके सामने होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा. ओके, डिस्पाइट चूजिंग द अदर लैंग्वेज, आपको यूपीएससी ये सहूलियत देता है कि आप क्या कर सके, अपनी जो लैंग्वेज है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज मेंशन्ड है उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो वो जो फैसिलिटी है वो आपको मेंस के लिए, राइटिंग के लिए अवेलेबल होगी, बट जो प्री का जो पेपर होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा. ठीक है, यहाँ पर जब हम आते हैं क्वालिफाइंग पेपर्स में, तो यहाँ पर जो पेपर 1 है, यहाँ पर आप एक इंडियन लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. सो जो भी हमारी 22 लैंग्वेज है उसमें से कोई एक लैंग्वेज आप पेपर 1 के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो पेपर बी है उसमें आपको इंग्लिश कंपलसरी है. ओके, सो दिस इज व्हाट हियर दिस the choice you have been given to you, that here you can choose one of the language given in the 8th schedule, all the 22, among the 22 you can select one language. Okay, here English is compulsory, so you cannot you don't have choice here, you have to select this English. Okay, that is the compulsion one. Now is there any qualification criteria here? Definitely. Okay, so you have to at least secure 25% marks. ओके, सो 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा. इसका टाइम ड्यूरेशन अगर बात करें तो अगेन इट इज फॉर दी 3 आवर्स. ओके, यहाँ पर आपको एटलीस्ट 75 मार्क्स हर पेपर में स्कोर करने हैं, तभी जाकर आप क्वालिफाई कर पाएंगे राइटिंग मेंस के लिए. ओके, सो दिस यू हैव टू गेट एटलीस्ट 75 मार्क्स हियर इन दिस पेपर. ना जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो प्रीलिम्स का हुआ है आपका पेपर 1 एंड सी सैट, ओके, एंड हियर ऑल्सो द क्वालिफाइंग पेपर ए एंड बी, इनके मार्क्स आपके फाइनल स्कोरिंग में इंक्लूड नहीं किए जाते. ओके, सो जो भी क्वालिफाइंग पेपर है या जो जीएस का पेपर आपने पेपर 1 दिया था या सी सैट दिया था, इनके मार्क्स आपके फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी या जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा उसमें वो मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे. ओके, इसके बाद का जो प्रोसेस है, यू हैव द एसे पेपर. ओके,
The next you have, okay, the second you have the essay paper, जो इसके मार्क्स कितने होंगे 250 मार्क्स का जो ऐसे होगा, इसमें आपको एटलीस्ट 2 ऐसे लिखने हैं, ये 125 मार्क्स ईच होंगे। दोनों पेपर्स में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। उन 4 ऑप्शंस में से किसी एक पर आपको ऐसे लिखना है इन द लैंग्वेज विच यू हैव सिलेक्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। सो हियर यू डोंट हैव कंपल्सरी टू राइट इन इंग्लिश और any other language, but the language which you have selected in your mains, for your mains, that would be the language for writing here in the examination. Okay, so essay again, this would be for 3 hours. Here you have the 250 marks, ठीक है। Then in the next segment you move towards the GS paper. Okay, so you have GS1, GS2, GS3 and GS4. Okay, so these are the 4 paper that you will give after the essay. Okay, this is the paper for 250 marks. All these papers are for 250 marks. Okay, now the GS1 generally it will include the history and geography. Roughly I'm saying, because एक next segment हम फिर बनाएंगे जिसमें कि आपको in particular जो भी पेपर्स है उनमें क्या सिलेबस है उसका डिटेल एनालिसिस हम नेक्स्ट सेगमेंट में जरूर बना के देंगे, ठीक है। सो अगर हम यहाँ बात करें, सो GS1 जनरली आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड है। देन कमिंग टू द GS2, इट इज रफली पॉलिटी। GS3 is for economics, and GS4 is your ethics. Okay, all these are for 250 marks. Time duration would be the same, 3 hours, and these are scoring in nature. Okay, moving forward, you have the optional one. Moving forward, you have the optional one. Now the UPSC have provided you about 26 subject, which you, among whom you can select one as your optional subject, and there would be 2 papers, paper 1 and paper 2. तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल में 2 पेपर मिलेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल ले रहे हैं, तो हिस्ट्री को अगर हम क्लासिफाई करें तो आपके पास एंशियंट हिस्ट्री होती है, फिर मिडाइवल होगी, फिर आपकी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री होगी और वर्ल्ड हिस्ट्री होगी। तो इस तरीके से आपको पेपर 1 और पेपर 2 में उनकी क्लासिफिकेशन मिलेंगे। ओके, सो दे में आस्क यू द एंशियंट एंड मिडाइवल इन द पेपर 1, एंड द पेपर 2 यू वुड हैव कंटेम्प्रेरी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। सो इस तरीके से हिस्ट्री के मल्टीपल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 को क्या कर दिया है, क्लासिफाई किया। ये सिर्फ एग्जांपल है, ओके, दिस इज जस्ट आई हैव टेकन एग्जांपल फॉर हिस्ट्री। ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं यूपीएससी द्वारा, ठीक है। दिस वुड बी फॉर 250 मार्क्स एंड दिस वुड बी ऑल्सो फॉर दी 250 मार्क्स। ओके, so here you complete your entire written process, starting from qualifying examination, then you have essay, then GS4 paper, and then you have the optional 2. Okay, then you move after this completion of this particular written, then the next segment you have the interview. Interview या फेस टू फेस, जो भी आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा उस फेस के लिए आप होंगे this segment. Okay, now this particular interview is for 275 marks. Now you have to keep attention here that this particular interview हो गया, okay, interview हो गया या फिर आपका essay मार्क हो गए, essay के मार्क्स हो गए, okay, ऑप्शनल के मार्क्स हो गए, ये तीनों चीज आपकी रैंक डिसाइड करने में काफी हेल्प करेंगे। ओके, इंटरव्यू के मार्क्स, ऑप्शनल के मार्क्स और एसे के मार्क्स, क्योंकि जो जीएस में आप लिखते हैं, ओके, जनरली जो रिटन एग्जामिनेशन देंगे सभी का नॉलेज कहीं ना कहीं इक्वल होता है, ओके, और जीएस में कोई इतना डिफरेंस नहीं आता, बट जहां आपकी रैंक डिसाइड होगी वो होगा आपका एसे,
secondly आपके optional के paper, और third interview. So you have to pay more attention on this. Okay, and here in the Infinity we will also guide you accordingly. Okay, so you don't need to worry about it. Here I have provided you the marking scheme as I have told you that in General Studies 1 you have 250 marks. Okay, here you can see the Indian heritage, culture, history and geography and world and society. Okay, for GS2 it is about the polity section, governance, constitution, social justice, polity and international relation. GS3 is about the economics, biodiversity, environment, science, disaster management. Okay, then for GS4 you have ethics, integrity and aptitude. Okay, this whole paper would include the total marking. If you say it is for 1750 marks, you can see here, and this with interview will include 2025 marks. Okay, so this is the entire process for the examination. Now one thing you have to keep in mind that in this particular interview, okay, we will also guide you in these at our institute, but what you think you need to keep in mind is that on what factors they are going to judge you. Okay, is that only they would ask you the technical knowledge? Is it the only thing you have to prepare for? No, सिर्फ आपको टेक्निकल नॉलेज पर नहीं चेक किया जाएगा, आपको वहाँ पर आपका ओवरऑल जो आपका एटीट्यूड है, ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है, उस पर आपको चेक किया जाएगा कि कहीं आप काफ़ी एक्सट्रीम तो नहीं है किसी डिसीजन लेने में, या कहीं आप इमोशनली इम्बैलेंस तो नहीं है, इमोशनल डिसीजन तो नहीं लेते. ओके, सो आप कितने ऑनेस्ट है अपने वर्क के लिए, कितने हार्ड वर्किंग है, ओके, कितने डेडिकेटेड है अपने किसी भी वर्क के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक की जाएगी. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरव्यू. नाउ at last I would like to summarize it here, okay, so that you can have a proper understanding again. Okay, so you just see you have for prelims 2 paper, GS and CSAT. Then you go for mains. Here you have qualifying. There would be 2 paper, A and B. Okay, then you have the essay one. Then you have GS. In GS you have GS1, GS2, GS3 and GS4. Then you have optional, and there would be paper 1 and paper 2 for the optional. Okay, this is for 200 marks, this is for again 200, this is for 300. These all are for 250 marks. Okay, then you have interview, which is for 275. Okay, so this is in a brief all about that what are the different section of the examination, different part of the examination and different papers which you have to go through in this entire process. Okay, now I hope that point is clear to you. If you have any doubt, please don't hesitate to ask in the comment section. Okay, we will definitely reply to your queries. Also we will provide you all these numbers of our institute, anytime you can call us. Okay, and we will definitely help you about your queries. Okay, here the Infinity has started this weekend lectures or weekend batch, which would be for Saturday and Sunday 4 to 8.
Okay, so we have this weekend batch specially for those who have passed their 10th examination, and also those who have passed their 12th examination. Okay, so for those students we have this 3-year integrated batch. This would be the weekend batch for Saturday and Sunday. So you have this 4 hours where our experts will guide you for preparation of this examination. Okay, this is our team under the guidance of respected Bhushan sir, okay, who has given number of selection in the UPSC examination, and this is the entire team of Team Infinity, including me. Okay, here is some of the glimpse of what we provide you in this integrated courses. आपको क्या क्या facilities हम यहाँ पर provide करेंगे, ये उसी के बारे में है. So we have this, apart from this online session, we have online queries session. Okay, parents and faculties meeting. Then we have group discussion. Okay, because this examination is all about developing an opinion. So here we will not focus on the rote learning. We will not fix our opinion in your mind. Here what we will do, we will develop your opinion. Okay, and that is the most important thing which will help you to pass through this examination. Okay, then we will help you to improve your reading skill. Okay, so this examination is, you will have to read more and more things. Okay, so you have to develop a reading skill where you are capable to analyze all these articles and all this data which you will read and make a sound decision. So that's why we will help you here to develop a reading skill, and also the writing skill. We'll provide you the notes. Okay, then we have these physical activities in which we will have the interaction with the all those officers which have qualified the examination. We will have an interview with them. Okay, so that they can also guide you for this examination. Okay, if you have any queries, you can call us on the given number. Okay, so I hope कि आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आया होगा. Apart from this, if you feel कि आपको कुछ और जानकारी चाहिए, तो let me know in our comment section. We will definitely make a separate video for all those topics. Okay, अगर आप कोई question पूछना चाहते हैं, so you are free to ask. You can also call in these number. हम आपको वहाँ पर counseling provide करेंगे. Thank you.